So example 5.3 is the determination of number of theoretical stages in काउंटर करंट मल्टी स्टेज ऑपरेशन। हम किस तरह जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं काउंटर करंट मल्टी स्टेज ऑपरेशन में। 1000 kg per hour of a solution of C in A containing 20% C by weight is to be expected with 400 kg per hour of solvent B in a counter current multi stage extraction unit. A and B are mutually insoluble. The equilibrium distribution of component C between A and B at the temperature of extraction are as follows. Equilibrium distribution of C और between C component की between C between A and B जो है वो वहाँ पर दी हुई है, that is kg of C per kg of A is and kg of C per kg of B, इनकी जो है मोलर कंपोजिशंस जो है यहाँ पे दी हुई हैं। How many theoretical stages will be required to reduce the concentration of C in A to 5%? हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ theoretical stages जो है will be required to reduce the concentration of C in A to 5%. यानी यहाँ तक 0.05 तक हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस जो है रिक्वायर्ड होगी starting from the 0.54. So F is 1000 kg. That is 1000 kg per ounce of solution C in A. Say F is 1000 kg. A is equals to F into 1 minus XF. XF हमारे पास 0.2 था सही. So A would be 1000 into 1 minus 0.2. That is A is 800 kg. XF हमारे पास 0.2 है. So हम कैपिटल XF फाइंड आउट कर सकते हैं. That is equals to XF over 1 minus XF. So XF is 0.25. XN is 0.05 जो कि हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, that is this 0.05, और जो कि यहाँ पे भी शो हुआ हुआ, और हमने यहीं तक जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारा XN जो 0.05 है तो हमारे पास कैपिटल XN would be small xn over 1 minus xn, that is 0.05 divided by 1 minus 0.05, that is xn is 0.0526. P हमारे पास 400 kg है, so A और B हम फाइंड आउट कर सकते हैं LM over GM, that is A और B, that is हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप, that is 800 over 400 which is equals to 2. So shown in figure 5.10 equilibrium line हम ड्रॉ कर सकते हैं from the given data, that is kg of C per kg of B और kg of C per kg of A. इनके जो हमारे पास वैल्यूज दी थी उससे हम इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? ये हमारे पास जो डेटा दिया था, ये यहाँ पास जो है इनके बीच में हम इक्विलिब्रियम लाइन ड्रॉ करेंगे इस डेटा से। यानी यहाँ पर y एक्सिस पे kg of C पर kg of B है, सही, kg of C पर kg of B, ये हमारे पास जो है ये हम y एक्सिस पे के पॉइंट्स हैं, और जो अपवर्ड वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे पास x एक्सिस वाले हैं, x एक्सिस के पॉइंट्स हैं सारे, और ये हमारे पास y एक्सिस के पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स हम एक कर्व बनाएंगे जो कि इक्विलिब्रियम कर्व कहेंगे। और फर्दर मोर हमारे पास जो हम एक ऑपरेटिंग लाइन बनाएंगे, ऑपरेटिंग लाइन जो हमारे पास स्टार्ट होगी फीड की कंपोजिशन से। फीड की कंपोजिशन हमारे पास क्या है, हमारे पास 0.025 है कैपिटल XF, और स्मॉल XF हमारे पास क्या था 0.4। कैपिटल XF जो हम पर 0.025 है, यहाँ से एक हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे that would touch the operating line। अच्छा, ऑपरेटिंग लाइन जो है हमारे पास जो है XF से स्टार्ट हो रही है, XF 0.25 था, और जो स्लोप हमारे पास जो है
हमने जो फाइंड आउट किया 2 के स्लोप से हम जो एक लाइन बनाएंगे that would touch the x-axis at 0.0526 that is xn की वैल्यू तक जो हमने फाइंड आउट किया है, यानी xn और xf के बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप होगा 2। तो यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे स्टेज बनाना, पहले ड्रॉ लाइन करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम कर्व को टच करे, देन जो है परपेंडिकुलर लाइन दैट वुड टच द ऑपरेटिंग लाइन, देन अगेन parallel line that would touch the equilibrium line, then parallel line that would touch the operating line, and then again the parallel line that would touch the equilibrium line. So हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो कंप्लीट स्टेजेस हैं वो 2 बन रही है, 1 and 2। ये थर्ड स्टेज पूरी कंप्लीट नहीं बन रही। So the operating line is drawn through the point 0.05260 with a slope of 2 till except 0.25. मैंने बताया by drawing the steps between the equilibrium and operating lines, the required number of theoretical stages is found to be 2.25. और हम जो है हमेशा ड्रॉ करेंगे steps from the top to bottom for the accuracy. Algebraic method for lean gases. In most absorption operations, the equilibrium curve is non-linear, and in some cases, particularly in absorption of rich gases, the operating line may be curved. In such situations, graphical methods must be used for the estimation of number of stages and composition. However, if both equilibrium and operating lines are straight and the former passes through the origin, analytical solutions are possible. In such cases, the material balance equations around an plate n, equation 5.6 may be combined with equilibrium relation that is y equals to mx, and rearranged to give the equation. So हमारे equation 5.6 that is n1 plus l prime m xn minus 1 equals to g prime m y rearrange करेंगे तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। देन y इक्वल्स टू mx के इक्विलिब्रियम रिलेशन यूज करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आई है। और yn इक्वल्स टू yn प्लस 1 प्लस a yn माइनस 1 माइनस a yn, यानी a को a हम क्या ले रहे हैं, दैट इज दिस फॉर्म, दिस इज द a। This is L prime over m g prime m. Solving for yn, we get this equation y equals to y plus 1 a y minus 1 over a plus 1 is absorption and is so operating line to that of the equilibrium line. Absorption factor has considerable economic significance in absorption. For instance, if absorption factor is less than 1, the equilibrium and operating lines tend to converge near the bottom of the absorber, which would limit the operation of the absorption. If absorption factor is greater than 1, any extent of absorption is possible. If sufficient number of stages or trays are available, there is a value of A for which absorption is most economical. For if estimate the economical value of absorption factor may be assumed to lie within the range of 1.25 to 2. Equation 5.16 may be written for the entire column having n players using the terminal concentrations
which are usually set by the design requirements. Thus referring to figure 5.8, हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, that is y equals to y n plus 1 plus a y n minus 1 over a plus 1. Consider an absorber with one plate, that is one plate है तो वहाँ पर n क्या होगा, 1 होगा. इक्वेशन y 5.17 हम किस तरह लिख सकते हैं, by when plate is 1, that is n is 1, that is y1 equals to y1 plus 1 plus a 1 minus 1 over a plus 1, that is y1 equals to y2 plus a y0 over a plus 1. For an absorber with two plates क्या होगा, n की जगह हम 2 पुट करेंगे इक्वेशन 5.17 में, तो हमारे पास जो है y2 की इक्वेशन आ जाएगी y3 which is equals to y3 plus a y1 over a plus 1. Substitute equation in above equation 5.18. ये जो y2 की इक्वेशन है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y2 equals to y3 a plus 1 plus a y2 plus a नॉट over a plus 1 whole square. देन हम रीअरेंज करके लिखेंगे इक्वेशन को, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सिंपल सिंप्लीफिकेशन की है और जो है कॉमन टर्म्स को हमने सेपरेट आउट किया है. हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बन रही है y2 की, that is y3 plus a y1 over a plus 1 equals to y3 into a plus 1 plus a square y0 over a square plus a plus 1. For absorber with three plates y3 हमारे पास इक्वेशन 5.17 हम लिख सकते हैं y3 equals to y4 plus a y2 over a plus 1. So y3 की ये इस इक्वेशन को हम जो है 5.19 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम हमारे पास y2 in terms of y4 आ जाएगा, that y3 in terms of say that is this equation. rearrange करके आगे हमने लिखा है तो वहां पर इक्वेशन आ गई है. In this way for absorber with n plates हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं y n equals to y n plus 1 a n minus 1 plus a n minus 2 plus a square plus a plus 1 plus a n y naught over a n plus a n minus 1 plus a square plus a plus 1. Expressing the series in the numerator and denominator in terms of their summation and rearranging, we have yn equals to yn plus 1 a n minus 1 plus a minus 1 y naught over a n minus 1 minus 1. Referring again to figure, material balance between the top and bottom of the column will be expressed as टॉप एंड बॉटम के बीच हमारे पास जो है मटेरियल बैलेंस हम की क्वेश्चन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, G prime m that is input equals to output. इनपुट हमारे पास क्या हो रहा है G prime m y plus 1 बॉटम सेंटर हो रहा था और टॉप से हमारे पास L prime m x नॉट हो रहा था, which is equals to जो हमारे पास m हो रहा है, क्या हो रहा है G prime m y1 एग्जिट हो रहा था अपवर्ड टॉप से, और जो है बॉटम से हमारे पास जो है एग्जिट होता है L prime m x n. Which may be expressing by expressing x naught and x n in terms of y naught and y n respectively, and on rearrangement may be written as in this equation where a हमारे पास absorption factor था जो हम पिछली स्लाइड में बताया, that is equals to L prime m over m G prime m. Put above in equation 5.24. 5.24 में हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है वो यूज करेंगे, यानी L प्राइम m ओवर m G प्राइम m की जगह a हम लिख देंगे. सो हमारे पास जो है yn की इक्वेशन आ रही है दिस इक्वेशन रीअरेंज करके. नाउ इक्वेशन इक्वेटिंग इक्वेशन 5.22 एंड 5.25 इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दैट इज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. इन दोनों के जो है हमने इक्वेट किया, देन जो कॉमन टर्म्स थी उन्हें हमने
सेपरेट आउट किया, ए जो हम दूसरी साइड पे लेके गए वहां पे मल्टीप्लाई हुआ, n+1 -1 हम लेफ्ट साइड पे लेके गए मल्टीप्लाई के लिए। देन जो कॉमन टर्म्स थी हमने उन्हें सेपरेट आउट किया, प्लस माइनस सिंपल जो जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई वो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो हमारे पास 5.2 से इक्वेशन है, बन जाएगी y+1 - 1 an+1 - 1 which equals to yn+1 - y0 an+1 - a। या फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। Replacing y0 by mx0 we get this equation। इस 5.27 इक्वेशन में हम y0 की जगह हम mx0 लिख सकते हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। For a column with n theoretical pairs of pairs, left-hand side of equation 5.28 represents the ratio of the actual change in gas composition to the change in composition that would occur if the outgoing gas were in equilibrium with the incoming liquid. Equation 5.28 is useful in calculating the number of theoretical stages of place required for a given change in gas composition. From equation 5.23, we have this equation: g prime m y+1 plus l prime m x0 equals to g prime m y1 plus l prime m xn। सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो हाँ हमारे पास l प्राइम m ओवर g प्राइम m जो है उसकी इक्वेशन आ जाएगी दिस, और जो है l प्राइम ओवर g प्राइम m क्या होता है इज इक्वल टू ma होता है, बिकॉज a हमारे पास क्या था l प्राइम m और g प्राइम m था, सही। सो हम इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे, यानी l प्राइम ओवर g प्राइम की जगह हम mn लिख सकते हैं इक्वेशन में। देन सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को फर्दर, कॉमन टर्म सेपरेट आउट किए हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी yn+1 plus ma x0 equals to yn plus ma xn, and a equals to yn+1 minus y1 over m xn minus x0 equals to yn+1 minus y1 over y n static minus y0 static. From equation 5.28 we can write this equation. When do it हमारे पास we get this, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स मैंने यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं। जो है हमारे पास ये इक्वेशन आए y+1 minus mx0 over y1 minus mx0 into 1 minus 1 over a plus 1 over a over ln a. Question 5.3 suggested by Colvin permits the direct estimation of the number of theoretical stages of plates। इस इक्वेशन से हम जो डायरेक्ट नंबर ऑफ theoretical stages फाइंड आउट कर सकते हैं। This equation is useful when the number of stages of plates is known. It is also useful in visualizing the effect of varying mgm over lm on number of plates on the separation. Graphical solution of equation 5.33 in the form of this. For differential, values of mgm over lm are available in the literature. When a equals to 1, absorption factor equals to 1, the equation हम बस equation लिख सकते हैं this whence n equals to y+1 minus y1 over y1 minus mx0. Again, Papan is Kresmer
In case of low absorption from gases, variation may be neglected, and average values of GM and NM may be used along with the compositions in mole fraction without any serious error. In such case, equation 5.283033 and 5 may be explained in terms of GM, LM, X, and Y for rough estimation of the number of theoretical stages of plates. Design procedure for concentrated gases. Concentrated gases के लिए graphical method may be applied rigorously for the absorption of a component present in high concentration, provided the design diagram takes into account curvature in the operating line due to changes in the gas and liquid flow rates, and the curvature in the equilibrium curve from non-ideal solubility. Temperature changes due to higher heat of absorption may also have significant effect on the equilibrium relation throughout the column. Continuous differential contact में हमारे पास क्या होता है? In contrast to stage wise contact, there may be continuous contact between the two phases without any intermediate separation. For instance, in packed towel, liquid moves over the pegging and the gas flows through the solid liquid matrix coming in continuous contact with the liquids, so that there is continuous differential mass transfer between them. Relate with counter gas. Say continuous mass transfer. The solute concentration in each phase and change and current processes. This फेज जी तक हमारे पास क्या होगा? सिर्फ कंपोनेंट ए डिफ्यूज हो रहा होगा, और जी जो है हमारे पास लाइटर फेज है और एल हमारे पास हैवियर फेज है. बैलेंस हम लिख सकते हैं G1 that is 1 plus M1 plus which is equals to G2 Y2 plus L2. फर्दरमोर हम इसे रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास जो हमारे पास जी वाली टर्म्स है वो हमारे पास सेपरेट और गैस और लिक्विड सेपरेट हो जाए टर्म G1 माइनस G2 Y2 को G1 Y1 जो हमारे पास जो है G प्राइम के इक्वल है n which is equals to G प्राइम Y1 and G2 Y2 equals to G prime Y2. So हम कैपिटल Y1 के इक्वल होता है स्मॉल y. सिमिलरली जो है कैपिटल X1 किसके इक्वल होता है? X1 over 1 minus X1 and L2 X2 वहाँ पर L prime X2 के होता है, where Y and X are जो यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं of solute A in phases gas and G gas and L liquid phase. Y and X are हमारे पास मोल ratios हैं of solute A in phases G and L respectively on a free basis and a component A free basis. G prime and L prime are molar mass velocities of solute free phases
इक्वेशन 5.37 यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी. This is the equation 5.40 is an equation to a straight line having a slope of L prime over G prime. L prime over G prime यहाँ पर slope है and which pass through the points x1, y1 and x2, y2. In a similar way, by making a material balance up to any intermediate point of the equipment where the concentrations of A in the two faces G and L are y and x respectively, we get this equation. Equation 5.41 is also an equation of straight line जिसका हमारे पास slope है prime over G prime जो पास हो रहा होगा पॉइंट से x1, y1 और x और y. Then the two straight lines represented by equation 5.40 and 5.41 have the same slope, that is L prime over G prime, and one common point in between. So they are the same straight line. In figure 5.12 हमारे पास equilibrium relationship show हो रहा है between x and y, which is shown by the curve OC. The straight line QP जो है represent the material balance and is called the operating line. QP यहाँ पर operating line है, OC यहाँ पर equilibrium curve है. इस operating line का जो slope है that is negative of L prime over G prime. Operating line is a graphical representation of the material balance. A point on this line represent the bulk average concentration of the streams in contact with each other at any section of the equipment. In case of diffusion from phase G to phase L, as in the case of gas absorption, the operating line will lie on the opposite side of the equilibrium curve as shown in this figure. The advantage of the counter current process over the co-current one is that for the counter current process the average driving force for the given situation is higher, resulting in the either small size equipment for a given set of flow conditions or low flow rates for a given size of equipment. And the transfer process is carried out in steady state counter current fashion as shown in the figure 5.13, where the subscript 1 indicates the end of the equipment where the phase G enters. यहाँ पर काउंटर करंट में जो ड्राइविंग फोर्स जो है एवरी ड्राइविंग फोर्स फॉर द मास ट्रांसफर इज हायर, सो यहाँ पर रेट ऑफ जो मास ट्रांसफर रेट है वो भी हायर होता है, जबकि को करंट में यहाँ पर जो है ड्राइविंग फोर्स है एवरी ड्राइविंग फोर्स वहाँ पर जो है लोअर होती है, तो हमारे पास जो है मास ट्रांसफर रेट भी जो है लोअर होता है. The material balance over the entire unit becomes this, यानी इनपुट इक्वल आउटपुट करके हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे काउंटर करंट में हमारे पास जो है जी और एल जो है एंटर होते हैं. सो G1 Y1 प्लस L2 X2 इक्वल टू G2 L2 प्लस L1 X1. रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को हम, तो हमारे पास आ जाएगा G1 Y1 माइनस G2 Y2 इक्वल टू L1 X1 माइनस L2 X2. फर्दर जो है हमने इसे लिखा है इन टर्म्स ऑफ G प्राइम, तो हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं G प्राइम Y1 माइनस G प्राइम Y2 इक्वल टू L प्राइम X1 माइनस L प्राइम X2, और हम इसे हम G प्राइम और L प्राइम को सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं बाय दिस इक्वेशन 5.43. For any section of the equipment where the concentrations are x and y, Gy plus L1 x1 equals to G1 y1 plus Lx. जहाँ पे हमारे पास x एंड y जो कंसंट्रेशन है जहाँ इक्विपमेंट के अंदर किसी भी सेक्शन पे, तो हम जो है
उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट इज dy प्लस l 1x1 equals to g1 y1 plus lx. And L prime x1 minus x equals to g prime y1 minus y. Equations 5.42 and 5.43 give the total material balance, while equation 5.44 and 5.45 gives the general relationship between concentration and the phases at any section of the equipment. Equation 5.43 is that of a straight line on y-x coordinates having a slope of L prime or G prime and passing through the points x1, y1 and x2, y2 as shown in the figure 5.14. The line will be above the equilibrium curve. ये line above the equilibrium curve से above हो गया. The diffusion from phase G to phase L. और अगर हमारे पास जो ट्रांसफर होगा फेज फ्रॉम एल टू जी, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग लाइन जो है लोअर होगी टू द इक्विलिब्रियम कर्व. For diffusion from phase G to L at a point where the phases are represented by the point P, where the driving force line is given by PM. PM से हमारे पास ड्राइविंग फोर्स लाइन जो है रिप्रेजेंट हो रही है PM से, जो कि जो है इक्विलिब्रियम कर्व से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है P पे, whose slope depends upon the relative diffusional resistance of the phases. The magnitude of the driving force changes from one end of the equipment to another. If the operating line touches the equilibrium, अगर हमारे पास operating line जो है, जो x1 y1 और x2 y2 वाली जो लाइन है, that is operating line, अगर ये जो है टच करेगी इक्विलिब्रियम कर्व को किसी भी पॉइंट पे, so the two phases reach the equilibrium, the driving force and hence the rate of mass transfer becomes zero at that point, and the time reached for a finite material transfer becomes infinite. So अगर हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन जो है वो टच कर रही है किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कर्व को, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच्ड हो गया है और हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो है दैट वुड बिकम द जीरो, और रेट ऑफ मास ट्रांसफर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा. Comparison co-current and counter-current. Both in cases of co-current and counter-current processes of mass transfer, linearity of the operating line depends upon the method of expressing the concentrations. In the present case, they are straight lines because molar ratio concentrations x and y are based on solute free flow rates G prime and L prime, which don't change during the process. If mole fractions or partial pressures are used to express concentration, the operating lines will be curved. अच्छा, ऑपरेटिंग लाइंस के जो हमारे पास लिनियरिटी है वो डिपेंड करेगा कि हमने किस टर्म्स में हमने इसे डिफाइन किया. अगर हमने जी प्राइम एल प्राइम अगर हमने एक्स और वाई की टर्म्स में हमने दैट इज मोल रेशियोज की टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया ऑपरेटिंग लाइन को, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन हो गया. अगर हमारे पास जो है ऑपरेटिंग लाइन को हम अगर उसे पार्शियल प्रेशर या फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शंस की टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास जो है ऑपरेटिंग लाइन क्या होती, कर्व होती है वो भी.